आज आपके सम्मुख एक ब्रिलियंट वक्ता को लेकर उपस्थित हुआ। जब मैं ये कहता हूँ कि ब्रिलियंट वक्ता, तो मैं सिर्फ इनकी क्वालिफिकेशन को नहीं देखता, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो एक्सपीरियंस मैडम तनेजा ने अपनी बुक में, जिसका नाम सर्कल फॉर लाइफ है, उसमें व्यक्त किया है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये एक बहुत ही ब्रिलियंट वक्ता हैं। शैलजा जी, हम आपका अपने रेडियो में स्वागत करते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में आई हैं। हमारे श्रोताओं को आप बहुत से पहलुओं पर रोशनी डालने जा रही हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक साबित होगा, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आजकल डिफरेंट गोल्स मद्देनजर रखे जा रहे हैं, उनको लेकर बात कर रही हैं। इसमें पोइट्री है, इसमें आपने अदरवाइज एज वेल बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को व्यक्त किया है। बिफोर वी स्टार्ट योर फॉर्मल इंटरव्यू, आई वुड लाइक दैट यू शुड स्पेल आउट योर qualification plus your exposure and your experience in different fields of life, even at an international level, because I happen to know that you have been working in the various agency of UNO. So please let our audience should be fully aware of your qualification and your experience. Thank you, sir. Yes. First of all, a big thanks to you for allowing me to come here and talk about my book, which is my latest book, the name of Circle for Life. And this is a very, very unique initiative that I have taken, but I would also like to introduce myself. First of all, I am born and brought up in India, very much, connected to the social impact as a heart that I have. And I started my journey with the private sector. I was in the banking when I started my career. Okay. And I was doing very well, rising and shining in my early 20s in the private sector. Okay. But there is something that we feel is like a calling. Okay. And at that time where I was doing very good as a northern region, professional for the banking and everything. But somewhere I was not happy, to be very honest. I was thinking that there is something that I need to do which is more meaningful. Okay. And I didn't know what to do, what exactly, should I upgrade myself in terms of qualification, because in 20s, it's a very young age to understand our calling and groom ourselves accordingly when we don't have any mentor. Right. So I think that that was a big challenge. Yes. But slowly and gradually, I got an opportunity to work with United Nations. Okay. And I actually understood a very different kind of understanding of the subjects of development sector. Okay. And I got an opportunity to work with various UN agencies, Okay. like UNDP, like ILO, UNAIDS, and UNODC. Okay. World Health Organization also. So Okay. that gave me a complete different understanding of how the challenges are, how development sector is working, functioning. But there was another understanding which I wanted to develop more deeply, how the national response, how the government works, and that gave me an opportunity to be based in different government departments, deputed by the United Nations organization that have hired me at that time to majorly work in the health sector. Okay. More than, I think, 15, 16 years, more than I think that, I have worked extensively in health sector. Okay. So I Shailja understood, ji, sorry. Just sitting at an international level and having the qualification of
postgraduate in administrative sector, were you dealing only with Indian context or you were dealing at a international context? Yes, I got opportunities to work at South Asia Okay. with a better understanding of Asia, Asia Pacific, South Asian countries, and Okay. the kind of situations and challenges in health majorly. And then there were some projects which were global. Okay. So that gave me a broader picture Yes. of the issues, not Yes. just focused on our Yes. country, but how Africa region is different. The issues are different. Yes. How Asian countries are dealing with the same problem Yes. in a very different context. Yeah. And the response is very different. If I talk about just India, Huh. in different states, the strategy of any program is not the same. Definitely. Because in one country itself, we have very different audience Okay. and the population. Okay. So the response of any national program is also different state-wise sometimes. Right. Right. So that also gave me a broader understanding and a deeper understanding of national programs, of how UN works, how community works, how children and youth and girls and women are empowered, what are the gap areas, because 20 years, more than 20 years of being into development sector and purposely trying to go to a deeper level in my approach, in my understanding, in my knowledge. I also did certain certifications which I thought are more important to allow me to contribute better in my area of work. So I did. Shailja ji, I would like to understand, and so do my audience would try to understand this thing, that at such a international forum, how you were getting the feedback of different countries of all these different areas on which you were working? Should I put it again? Yeah. My point is this, that supposing about Africa, you want to study certain such aspects which are not related in India, and which are related with India are not related in other parts of the country of Asia. My point is how, leaving apart the comparative study, when you were supposed to study a particular specific country, how was there different agencies which were helping you to measure that study and then draw your own conclusions? What was the modus operandi which was being followed by you? Okay, so first of all, I'm not a technical person. Yeah, fair enough. But the projects that I've handled, the kind of work that I did, and the kind of commitment that I had, I explored different kind of opportunities. Okay. I will pick up one area which I have worked in one country in Africa while being based in Delhi only. Okay. But I'm very closely working on certain projects in Uganda. Okay. That is again addressing women issues, Okay. empowering girls. Can you name? Yes. So the challenges which I could see while I'm working on different projects in India, focusing on girls and women, are different than the girls and women facing issues in Uganda. Yes. So that is my own understanding. I think we are still in a better position to give solutions. Okay. Whereas Africa, certain countries of Africa would need more support. Okay. That is what my understanding is. When I try to reach out a remote village in Uganda, where we were doing some intervention for educating and empowering not only girls but also boys on menstrual hygiene, a basic necessity of internet, which is a mode of communication, Yes. a very priority kind of a thing for us. It was a very big challenge for us Okay. to connect with them.
Okay. very poor connectivity. Okay. And then we faced different kind of challenges to have more partners contributing to this particular field level activity, Okay. giving them demonstrations for reusable pads, and those things were somewhere very new to them. Okay. Okay. So Was it because of lack of education or no, lack of? I would say that a lot of support is required. Acha. I think many organizations need to come forward, though a lot of work is being done in Africa, in different Okay. countries in Africa, Okay. and many other countries across the world. Okay. But I believe that there are certain part of countries. I have a desire to work in the war zones countries as well. Okay. I have a very strong pull to work for the refugee community. Okay. I have not got that opportunity yet, but if I get this opportunity, I would definitely like to Okay. give my best Okay. support Now in that area. coming to your book, would you spell out what exactly you have taken in your this book, one which is being named as Circle for Life? What are the various tenets, various features you have taken in this book? Okay, so first of all, I would like to share about the Sustainable Development Goals. The Okay. book is to educate and empower children and youth across the world Yes. on SDGs. We call Sustainable Development Goals. Okay. A lot of people are aware of it, but not all. Yes. So while working in my own domain, Yeah. and working on sustainable development goals, I have been into a journey where I started working with the UN when Millennium Development Goals were there and transition to sustainable development goals happened. So that gave me a better understanding. Right. And the very first question I think the audience may be having, okay, what is SDG? How Yes. it emerged? Yeah. From where it emerged? Yeah. So the answer is that in 2015, the United Nations organized a summit where the member of the UN all participated, and a bigger picture with 17 development goals were this SDGs were formed Yeah. during that summit Right. and implemented across the member countries. इसी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए ही शैलजा जी, हमने आपसे पहले ये पूछा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे यूएन संस्था और उनकी एजेंसी से जुड़ी और किस तरह से फिर आपने इन गोल्स पर काम करना शुरू किया, और आपने राइटली बताया कि आपकी बुक इन्हीं टेनेंट्स के ऊपर डील करती है। अब हम एक एक करके इनके बारे में शॉर्टली बात करते हैं। जी जी। सो एज ए सेड दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं। हाँ। जैसे कि नो पॉवर्टी, Yes. जीरो हंगर, Okay. गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, Good. quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, Okay. decent work and economic growth, Yes. industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, Okay. sustainable cities and communities, Okay. responsible consumption and production, Okay. climate action, Okay. life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, Okay. and partnerships for goals. Okay. So ये 17 goals हैं। मैंने ओवरऑल अपनी कुछ असेसमेंट्स जो करी, जो मैंने इंडिपेंडेंटली करी इन माय प्रीवियस कंसल्टेंसीज जो मैं कर रही थी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा, और मैंने कई सेशंस यूनिवर्सिटीज़ में करे, तो मुझे एक ना गैप नज़र आ रहा था। बहुत सारे यूनिवर्सिटी आजकल तो मैंडेटरी है सर कई जगहों पे कि एसडीजीज पे काम करना ही है। जब मैं सेशंस के लिए वहाँ जाती थी और मैं उन स्टूडेंट्स के साथ बात करती थी, इंटरेक्ट करते थे हम लोग, तो मुझे ना बड़ा ऊपर ऊपर का नॉलेज समझ में आता था कि इनका नॉलेज अभी उतना डेप्थ के साथ नहीं आ रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने यूथ से कि ये लोग, क्योंकि 2030 तक कोशिश है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक्सपेडाइट किया जाए अचीव करने के लिए, और यूथ के शोल्डर पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उनको फ्यूचर लीडर्स देखते हैं, उनको चेंज मेकर्स देखते हैं, Yes. लेकिन क्या हम उनको एक्चुअल में सही गाइडेंस फाउंडेशन दे रहे हैं? हम अगर हम उनको
आज इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं। आप ये देखिए, जो बच्चे यूनिवर्सिटी से बिल्कुल पास आउट होने के एज पर हैं, जो मास्टर्स करने के बाद किसी ना किसी जॉब में जाने वाले हैं, राइट, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब में जाने के बाद ही कंट्रीब्यूट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ जब वो किसी जॉब में, किसी रोल में जब जाएंगे ना, तो वहाँ जो उनके एक्शन होंगे, यस, वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे उस एसडीजी की अचीवमेंट के लिए। यस, यस। तो मैंने ये एफर्ट किया कि ठीक है, हम कुछ इस तरीके से इनको समझाने की कोशिश करते हैं जो बहुत सिंपल है, बहुत गूढ़ टेक्निकल नॉलेज नहीं है। हाँ, उनको सिर्फ डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आए कि एसडीजी का डिस्क्रिप्शन क्या है, साथ में ये भी समझ में आए कि करना क्या है, ठीक, ऐसा क्या करें जो हम इसके लिए जो काम करें वो एक्चुअली मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ उसको पूरा करने के लिए। तो उस एफर्ट के साथ मैंने इस बुक को लिखा। शैलजा जी, मैं इस पुस्तक में देख रहा हूँ कि बहुत प्रोमिनेंट लोगों ने इसमें प्रीफेस भी लिखा हुआ है और इसको एक्नॉलेज भी किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ इनको अप्रिशिएट करते हैं, तो जो भी कोई इस बुकलेट को देखेगा, जो कि मेरा मानना है कि ज़रूर देखना चाहिए, वो अप्रिशिएट करेगा। मैं चाहूँगा कि इसमें जिन जिन लोगों ने ये मैसेजेस दिए हैं, कृपया उनके बारे में आप दो दो शब्द अगर कहें तो बहुत अच्छा रहे। ज़रूर। सबसे पहले तो सर मैं थैंक यू करना चाहती हूँ हर उस व्यक्ति का जो इस बुक की पूरी ओवरऑल जर्नी में मेरे साथ में जुड़े रहे। उनकी गाइडेंस, उनका सपोर्ट बहुत बहुत वैल्यूएबल रहा मेरे लिए। सबसे पहले हमारे डॉक्टर JVR प्रसादा जी हैं, जो कि फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और UN सेक्रेटरी जनरल के फॉर्मर स्पेशल एनवॉय भी रह चुके हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एडवाइस किया, गाइड किया, एंड आई एम सो थैंकफुल। जो शब्द उन्होंने इस किताब में फॉरवर्ड में दिए हैं, मैं दिल से उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और उसके अलावा कुछ ऐसे सीनियर ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपने अपने डोमेन में बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। और जब उन्होंने इस बुक को रिव्यू किया, इस बुक को देखा और उस बुक के बारे में कुछ कमेंट मुझे दिया, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक। ऐसे ही एक हमारी सीनियर ऑफिशियल है मिस डेनीला मलिक, जो कि UN के हेडक्वार्टर में बेस्ड है न्यूयॉर्क में। उन्होंने इस शी हैज़ अ वेरी डीप कनेक्ट विद पोइट्री। ओके। तो ये एक पोइट्री के थ्रू एक ऐसा यूनिक इनिशिएटिव है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझाने के लिए, बताने के लिए बनाया गया। सो शी रियली सपोर्टेड, और आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने एक एक पोएम को पढ़ा, समझा और मुझे एक बहुत अच्छा फीडबैक उन्होंने दिया इसके लिए और सपोर्ट भी एक्सटेंड किया। राइट। ऐसे ही मिस्टर जैक्सिम है, जो कि वर्ल्ड टॉयलेट डे के फाउंडर हैं, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के फाउंडर हैं। उनकी मतलब ही इज़ एन इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी। मैंने अपने स्वच्छ भारत के टाइम पे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस मैंने अपने काम में दिए, उनमें बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि उन्होंने इसमें एक अपना कमेंट हमें दिया जो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। डॉक्टर अंबिका शर्मा है, जो हमारे साथ IDRC में भी काम कर चुकी हैं, और उनका एक फोकस यूथ के लिए तो है ही, गर्ल्स एंड वुमेन के लिए, जेंडर के ऊपर उनका एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनके काम के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। और जब ये बुक मैंने उनसे शेयर करी तो उनका सपोर्ट मुझे मिला, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। डॉक्टर एंड्रियास ब्रैंडर, जो वियना में नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज फॉर डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब ये जो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, ये डिफरेंट एरिया ऑफ डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से यहाँ पर उन्होंने इस बुक को रिव्यू किया और अपने कमेंट्स दिए। तो मैं कह सकती हूँ कि एक ओवरऑल असेसमेंट इस बुक का डिफरेंट एरियाज में हुआ। और इसमें लास्ट में भी आप देखेंगे सर, इट्स अ ह्यूज लिस्ट ऑफ पीपल हु आर थैंक्ड, जिन्होंने इस बुक को रिव्यू किया। किसी ना किसी लेवल पे कहीं ना कहीं उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा, उनकी एक गाइडेंस रही। मैंने कहीं उनसे ज़िंदगी में कुछ सीखा होगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए मैंने उनको इसमें थैंक यू किया। और एक स्पेशल थैंक्स टू दीपना, जिसने इस बुक की एडिटिंग करी है। ठीक है।
आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल. एक एक वर्ड, एक एक कहते हैं ना कॉमा तक को दीपना ने बहुत अच्छे से शैलजा जी, मेरा एक सुझाव है जी कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी ये पुस्तक भेजी बिल्कुल जाए सर, बिल्कुल. ये तो किताब हम यस, शेयर कर चुके हैं हमारे ओके, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी से, राइट, और हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी को भी इसकी एक कॉपी भेज चुके हैं, यस, और ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट इंडिया जी को भी एक कॉपी भेज चुके हैं. यस, तो हमारी साइड से हमने अपनी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे ये बुक शेयर किया है, और अब हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है, हम इसको वाइडली ले जाना चाहते हैं. वी वांट टू टेक दिस बुक अक्रॉस द वर्ल्ड. yes, There is a plan to launch this in different countries, yes, where English is a language which they can accept, right, and also not only in India but definitely in different countries people are asking for us to bring it. definitely, Another thing is, we also looking forward to take it to the UN headquarters, yes, from where I think it will have a very different value. definitely, So definitely, this is, we are trying. yes. Shailja ji, any of the poem would you like to uh, just spell out for our audience, just Definitely. as a sample, so that they can understand that on the one side we are talking about the goals, and other side we are talking about poems. Yes, sir. So how it has been beautifully blended and conveyed. Let us have one Sure. example at Sure. least. Yes. So आज 1st of March है, and we have entered into a new month. Yes. जहाँ पे हम Women's International Women's Day भी मनाते हैं on 8th of March. So in that context, मेरा focus gender equality पे है, जो कि SDG number 5 है. Yes. So I'm reading this poem and dedicating it for International Women's Day that is coming right ahead. And I hope that this message will help someone somewhere to lead a good life. Yes. So, achieve gender equality by empowering girls and women. By denying their rights, we deny half of the population. Political, economic, and social equality will benefit the world in totality. End discrimination, deep-rooted bias and pain. Women struggling for justice will break every chain. Unheard sorrows and sufferings are yet deeply stored. Create a world where their voices are not ignored. End exploitation that held them back. Stop early marriages, genital mutilation, keep a track. Shatter stereotypes and embrace the diverse. Inclusion and representation within our universe. Protect them from masculine greed. From boardrooms to parliaments, let them lead. Provide access to healthcare for all. Support their well-being and see women standing tall. From safety and maternal care to reproductive rights, gender equality talks about all heights. By ending violence, balance will be restored. Economic empowerment must be ensured. For a world where women excel in every space, give opportunities and equal pay with grace. Listen to their voices, struggles, success, everything. A wealth of knowledge it may bring. Together, we can eradicate prejudice for all. With strong policies, nations stand tall. Eliminate all harmful practices, new or old. Empower girls and women for a harmonious world. Thank you. ब्यूटीफुल. शैलजा जी, मुझे ऐसे लगता है कि आपने इस पोएम के माध्यम से जो स्त्री जगत में एक डीप डाउन फीलिंग्स हैं उनको आपने इस पोइट्री में कन्वे किया है. Yes. एंड आई होप कि जैसे कहा जाता है ना कि भाई आप थोड़े को बहुत समझ के पढ़िएगा, तो मेरा भी श्रोताओं से ये अनुरोध रहेगा कि आपकी एक एक पोएम में, चाहे एक पोएम के रूप में लिखा गया है,
लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट है वो इतना डीप डाउन है कि उसको बार बार पढ़ने से उसकी गहराई और उसकी जो संवेदना है वो पूरी तरह से व्यक्त होगी। तो श्रोताओं, इन शब्दों के साथ हम शैलजा जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस वाइड सब्जेक्ट को अपनी इस छोटी सी बुकलेट में, सर्कल ऑफ लाइफ में बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। जब भी आपको मौका मिले आप इस पुस्तक को पढ़िए और इसकी गहराई को आप बार बार अध्ययन करके ज़्यादा महसूस कर पाएंगे। और ये पुस्तकें आपको रेडियो बूज में भी अवेलेबल हो जाएंगी। आपकी जो मांग हो आप हमें बताइए, हम आपको इन पुस्तकों को प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शैलजा जी, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आईं और आपने इस सब्जेक्ट पे हमारे साथ बातचीत की। थैंक यू। ये बुक हमारी अमेजोन पर भी अवेलेबल है। वेरी गुड। जो भी इंटरेस्टेड हो, जो भी विलिंग हो, हम लिंक शेयर कर देंगे। ये बुक अगर स्कूल्स में कहीं ले जाना चाहें तो स्कूल्स के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ में हम सेशंस भी करते हैं ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अगर ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी हो तो भी आप बता सकते हैं और इस बुक को अमेजोन से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं लोग। थैंक यू।